Om Agyanam Timirandasya Jnanajanaşalakaya Chakshurunmiltamena Tasmai Shri Gurave Namah. Shri Chaitanya Manovistam Sthapitam Yena Bhutale Swarupam Kadamiyam Dadati Swapadantikam Vandeham Shri Guru Shri Yudapadakalam Shri Guru Vaishnavam Cha Shri Rupam Sagrajatam Sahagandagunathuritam Tam Sajivam Sadhvetam Savadutam Parijana Sahitam Krishna Chaitanya Shri Radha Krishna Padan Sahagan Lilda Sarvatam Cha ओम विष्णुपदा कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमती आने का चक्कर हो रहा है, लेकिन होना नहीं चाहिए था, छोटे में भी करना चाहिए। नमस्ते तत्देवी गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादिपा सदेश तारिणे। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपेकांत राधा कांत नमस्ते तप्त कंचन गौरांगी श्री राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये वंचा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवसदि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। Yes. Ashwini Prabhuji, can we start with you? Okay. तो हम लोग प्रभात की स्मॉल बुक पढ़ रहे हैं जिसका नाम है कमिंग बैक। तो कल हम लोगों ने प्रीफेस का कंप्लीट किया है इसका, और आज हम इसका इंट्रोडक्शन शुरू कर रहे हैं। इंट्रोडक्शन, द मिस्ट्री ऑफ कॉन्शियसनेस। डेथ, man's most mysterious, relentless and inevitable adversary. Does death means the end of life, or does it merely open the door to another life, another dimension, or another world? If man's consciousness survives the death experience, then what determines its transition to new realities? In order to gain a clear understanding of these mysteries, man has traditionally turned to enlightened philosophers, accepting their teachings a representative of a higher truth. Yes, Naveen Prabhuji. Hare Krishna. Hare Krishna Prabhuji. Criticize this method of acquiring knowledge from a higher authority, no matter how carefully the seeker may analyze it. Social philosopher E.F. Schumacher, author of Small is Beautiful, notes that in our modern society, when people are out of touch with nature and traditional wisdom, they consider it fashionable to ridicule and only believe in what they see and touch and measure. Or, as the saying goes, seeing is believing. Ishu Prabhu. But when man endeavors to understand something beyond the scope of the material sense, beyond instruments of measurement and the faculty of mental speculation, then there is no alternative but to approach a higher source of knowledge. Swati Mataji. No scientist has successfully explored through laboratory investigations the mystery of consciousness or its destination after the destruction of the material. Research in this field has used many divergent theories, but their limitations must be recognized. The systematic principles of reincarnation, on the other hand, comprehensively explain the subtle laws governing our past, present, and future lives. Yes, Ashwini Prabhuji. If one is to understand reincarnation at all, he must acknowledge the fundamental concept of consciousness as an energy distinct from and superior to the matter composing the physical body. This principle is supported by explanation of the unique thinking, feeling, and willing capacities of human being. Can DNA strands or other genetic components possibly induce the feelings of love and respect one person has for another? What atom or molecule is responsible for the subtle artistic nonsense in Shakespeare's Hamlet or Bach Mass in B minor? Man and his infinite capabilities cannot be explained by mere atoms and molecules. Einstein, the father of modern physics, admitted that consciousness could not be adequately described in terms of physical phenomena.
I believe that the present fashion of applying the axioms of science to human life is not only entirely a mistake, but also has something reprehensible in it, the great scientist once said. Indeed, scientists have failed to explain consciousness by means of the physical laws that govern everything else within their purview. Frustrated by the failing, Nobel laureate in physiology and medicine, Albert Gairogai recently lamented, "In my search for the secret of life, I ended up with atoms and electrons, which have no life at all. Somewhere along the line, life has run out through my fingers. So in my old age, I am now retracing my steps." मतलब लाइफ वेस्ट कर दी उसने completely. उसे लगा कि जो नॉन मैटर है वहां से लाइफ आ रही है, अब बुढ़ापे में लग रहा है कि अरे मुझे तो वापस शुरुआत करनी पड़ेगी. Accepting the notion that consciousness arises from molecular interactions requires an enormous leap of faith, much greater than that required for metaphysical explanation. As Thomas Euclid, the well-known biologist, said, "It seems to me pretty plain that there is a third thing in the universe, to wit, consciousness, which I cannot see to be a matter of force or any conceivable modification of either." अभी प्रभात इंग्लिश चल रही है ना, तो अभी प्रभात इंग्लिश चल रही है तो समझ में आ रहा है. अभी जैसे वो साइकोलॉजी फिलोसफर्स का कोट आता है ना, तब समझ में नहीं आएगा. करेक्ट ना? Yes. Further recognition of the unique properties of consciousness was given by Nobel laureate in physics Niels Bohr, who remarked, "We can admittedly find nothing in physics or chemistry that has even a remote bearing on consciousness. Yet all of us know there is such a thing as consciousness simply because we have it ourselves. Hence, consciousness must be part of nature, or more generally, of reality, which means that quite apart from the laws of physics and chemistry as laid down in quantum theory, we must also consider laws of quite a different kind. Such laws might well include the laws of reincarnation, which govern the passage of consciousness from one physical body into another." To begin understanding these laws, we may note that reincarnation is not an alien, antipodal event, but one that occurs with regularity in our own bodies during this very lifetime. In the human brain, Professor John Pfeffer notes, your body does not contain a single one of the molecule that is contained 7 years ago. Okay. Every 7 years, one's old body is completely rejuvenated. The self, however, our real entity remains unchanged. Our bodies grow from infancy to youth to middle age and then to old age. Yet the person within the body, the I, always remain the same. ये तो मतलब साइंटिस्ट ही बोल रहे हैं इतनी बात. साइंटिस्ट ही बोल रहे हैं, हर 7 साल में शरीर बदल रहा है. हाँ, मतलब 7 साल में शरीर बदल रहा है और जो उसका आई है बॉडी का वो सेम रहता है. ये बात भी साइंटिस्ट ही बोल रहे हैं. मेरे ख्याल से साइंटिस्ट तो बस इतना बोल रहे हैं कि 7 इयर्स में चेंज हो जाता है, क्योंकि कोट एंड कोट हो गया ना, एवरी 7 इयर्स वंस बॉडी. तो ये बाद में फिर प्रभात बताया. Okay. Incarnation based on the principle of a conscious self independent of its physical body is part of a higher order system governing the living being's transmigration from one material form to another. Since reincarnation deals with our most essential selves, it is a subject of the utmost relevance to everyone. Coming back explains the fundamentals of reincarnation present in the timeless Vedic text Bhagavad Gita. The Gita, thousands of years older than the Dead Sea Scrolls,
provides the most complete explanation of reincarnation available everywhere, anywhere. It has been studied before millennia by many of the world's greatest thinkers. And since the spiritual knowledge is generally true and does not change with each new scientific theory, it is still relevant today. Issue 2. हरे कृष्ण प्रभु जी, आवाज आ रही है मेरी? Yes, Prabhuji, yes. हरे कृष्णा प्रभुजी, आप म्यूट पे हैं प्रभुजी। नेटवर्क इशू आ रहा है। नहीं आपकी आवाज तो आ रही है, इशू प्रूव नहीं आ रही। हाँ हाँ yes, प्रभुजी। हाँ माता जी आप अब आ गया वापस आ आ गए। गया। ये इशू प्रूव मेरे को स्क्रीन ही नहीं दिख रही है, पता नहीं नेटवर्क इशू आ रहा है। ठीक है। तो अब अभी दिख रही है आपको? अभी नहीं प्रभु, अभी भी लोड ही हो रहा है मेरे स्क्रीन पे, पता नहीं क्या हुआ है फोन को। अच्छा, तो आप एक बार दोबारा कनेक्ट कर लीजिए प्रभु। नेक्स्ट जी डिवोटी प्रभु, मैं कर स्वाति माता जी। Harvard biophysicist D.P. Dupin writes, we may lead ourselves down a blind alley by adhering dogmatically to the assumption that life can be explained entirely by what we know of the laws of nature. By remaining open to the ideas embodied in the Vedic tradition of India, modern scientists can see their own disciplines from a new perspective and further the aim of all scientific endeavor, the search for truth. ये समझा नहीं प्रभु जी, मैं आपको समझाऊं क्या कह रहे थे। मतलब ये है कि वे साइंटिस्ट गलती कर रहे हैं ना, तो अगर वो वैदिक ट्रेडिशन जो है इंडिया का, जिसमें रिनकार्नेशन का एक कॉन्सेप्ट है, तो उसके लिए बोल रहे हैं कि इन सर्च ऑफ ट्रूथ, जो साइंटिस्ट जो सर्च कर रहे हैं ट्रूथ की, उसमें फिर उनको नया पर्सपेक्टिव उनको मिलेगा अगर वो वैदिक ट्रेडिशन इंडिया का एक्सेप्ट करेंगे कि भाई ऐसे ऐसे रिनकार्नेशन होता है। ओके करेक्ट है ना? यस सर जी। तो साइंस विद रिलीजन वाला कॉन्सेप्ट है एक के पास। हाँ, मतलब साइंस डिडक्टिव मेथड अपनाता है ट्रूथ ऑफ लाइफ पता करने के लिए। डिडक्टिव मतलब हम छोटे से शुरू करते हैं, तो एटम इलेक्ट्रॉन इन सब में फंस जाता है। तो एक साइंटिस्ट बोल रहा है कि वो मैं तो गलत फंस गया, मैं ओल्ड एज में भी आ गया, तो मुझे तो शुरू से शुरू करना पड़ेगा। तो वो डिडक्टिव मेथड है। और हम लोग असेंडिंग वे में जाते हैं, मतलब वो डिसेंडिंग है, हमारा असेंडिंग। असेंडिंग के सेंस में कि अथॉरिटी से सुना, हमने बिलीव किया, और उनका हम परंपरा में सुन ही रहे हैं बैक टू बैक। ओके in this age of global uncertainty, it is imperative that we understand the real origin of our conscious self, how we find ourselves in different bodies and conditions of life, and what our destinations will be at the time of death. The essential information is comprehensively explained in coming back. हाँ, इसमें ये पॉइंट अच्छा है, डिवोटी समझा रहे थे। ग्लोबल अनसर्टेनिटी मतलब ऐसा है कि एक तो ग्लोबल अनसर्टेनिटी वैसे हो गया कि किसी, जैसे अभी अटैक कर दिया रशिया ने यूक्रेन पे। दूसरा, जैसे नेचुरल कैलामिटीज आ जाती हैं, कुछ पता ही नहीं कहाँ पे क्या एकदम से क्या हो जाए। दूसरा अनसर्टेनिटी लाइफ में रहती है, पता नहीं क्या कब क्या बवंडर आ जाए, एक नया ही एपिसोड कभी भी शुरू हो जाता है। तो इसलिए अर्जेंसी है अनसर्टेनिटी होने की वजह से कि वी कैन नॉट वेरी मच प्लान कि ठीक है अब मेरा एक बार ये निपट जाए, फिर मैं स्पिरिचुअल लाइफ में ये शुरू करूंगा। स्पिरिचुअल लाइफ में क्यों, बिकॉज मटेरियल लाइफ में अनसर्टेनिटी है, स्पिरिचुअल लाइफ जल्दी जल्दी शुरू करना, इसलिए पॉइंट बता रहे हैं आप। सो okay, chapter 1 shows how reincarnation has profoundly influenced many of the world's greatest philosophers, poets and artists, from Socrates to Schellinger. Next, the process of reincarnation, as expounded in Bhagavad Gita, the oldest as most respected source book on the subject of transmigration of the soul, is presented. Yes, Prabhuji. Chapter 2, a lively dialogue between His Divine Grace A.C. Bhaktivedanta Swami Prabhupada and noted religious psychologist Professor Carl Fried Graf von Durkheim clearly shows how the material body and the anti-material particle, the spirit soul, can never be the same. In Chapter 3, a famous heart surgeon urges systematic research into the soul, and Srila Prabhupada cites the Vedic
version thousands of years older and strikingly more informative than modern medical science. Three fascinating narratives from the Vedic text Srimad Bhagavatam constitute chapter 4. These accounts stand as classic examples of how the soul transmigrates through different types of bodies under the control of the precise laws of nature and karma. In chapter 5, excerpts from the writing of Srila Prabhupada clearly demonstrate that the principles of reincarnation can be easily understood in terms of म्यूट पे चले गए situations that आ रही है आवाज? अब आ रही है हाँ जी In terms of older events. यहाँ से in terms of ordinary events and common observations that regularly occur in our daily life. The next chapter describes how reincarnation embodies a universal and infallible system of justice, wherein the soul is never banished to eternal damnation, but the constitutionally endowed with a permanent opportunity to escape the perpetual cycle of birth and death. Common misconceptions and chick notions about the reincarnation from the subject of chapter 7 and the concluding chapter, Don't Come Back, presents a process through which the soul can transcend reincarnation and enter realms in which it is finally freed from the prison of material body. Having once achieved this status, the soul never again returns to this endlessly mutable world of birth, disease, old age, and death. मतलब ये इस बुक के सारे चैप्टर्स का एक तरह से इंट्रोडक्शन हो गया कि चैप्टर 1 में आपको ये मिलने जा रहा है, 2 में ये, 3 में ये, 5 में ये, 7 में ये, इस तरह से. Yes, please. Okay, chapter 1, reincarnation, Socrates to Salinger. भगवद गीता 2.20 बताया कि for the soul there is never birth nor death at any time. He has not come into being, does not come into being, and will not come into being. He is unborn, eternal, ever existing, and primeval. He is not slain when the body is slain. Does life begin with death and end with death? Have we lived before? Such questions are normally identified with religions of the East, where the life of man is known to endure not only from the cradle to the grave, but through millions of ages, and acceptance of the idea of rebirth is nearly universal. As Arthur Schopenhauer, the great 19th century German philosopher, was observed, were an Asiatic to ask me for a definition of Europe, I should be forced to answer him. It is that part of the world which is haunted by the incredible delusion that man was created out of nothing, and that his present birth in his first entrance into life. वेस्ट का जो वो चलता है ना नॉर्म कि भाई यही नथिंग से हम लोग आ गए हैं और फिर नथिंग में चले जाएंगे, तो उसको sarcastically बोला है जर्मन फिलोसफर ने. भाई अगर मुझे कोई जबरदस्ती बोलेगा तो मुझे तो आंसर करना ही पड़ेगा जो भी वो लोग बोल रहे हैं. वैसा. Okay, Prabhuji. Naveen Prabhuji. Sure, thank you. Indeed, the dominant ideology of the West, material science, has for several centuries stifled and widespread interest in the pre-existence and survival of consciousness beyond the present body. But throughout Western history, there have always been thinkers who have understood and affirmed the immortality of consciousness and transmigration, and a multitude of philosophers, authors, artists, scientists, and politicians have given the idea thoughtful consideration. Issue 2. Ancient Greece. Among the ancient Greeks, Socrates, Pythagoras, and Plato may be numbered among those who made reincarnation an integral part of their teaching. At the end of his life, Socrates said, I am confident that there is truly is such a thing as living again, and that the living springs from the dead. Pythagoras claimed he could remember his past lives, and Plato presented detailed account of reincarnation in his major works. Briefly, he held that the pure soul falls from the plane of absolute reality because of sensual desire, and they
and then take on a physical body. First, the fallen souls take birth in human form, the highest of which is that of the philosopher, who strives for higher knowledge. If his knowledge become the philosopher can return to the external existence. But if he have but if he becomes hopelessly he descends into the animal species of it. Hard to believe that gluten and drunkenness may become masses in future lives. Violent and unjust people may take birth as wolves and hawks, and the followers of social convention may lose the bees and may become bees and ants. After some time, the soul again attains the human form, and another chance to achieve liberation. Some scholars believe that Plato and other early Greek philosophers derived their knowledge of reincarnation from mystery religion like Orphism or from India. Hmm. Hare Krishna. Judaism, Christianity, Islam. Hints of reincarnation are also common in the history of Judaism, early Christianity. Information about past and future lives is found throughout the Kabbalah, which, according to many Hebraic scholars, represent the hidden wisdom behind the scriptures. In the Zohar, one of the principal Kabbalistic texts, it is said the soul must re-enter the absolute substance whence they have emerged. But to accomplish this, they must develop all the perfections, the germ of which is planted in them. And if they have not fulfilled this condition during one life, they must commence another, a third, and so forth until they have acquired the condition which fits them for reunion with God. थोड़ा मायावाद फिलोसफी है यहाँ पे रीयूनियन मतलब वो बाकी सब चीजें तो ठीक बोल रहे हैं वैदिक सिस्टम के हिसाब से समझ गए ना आप लोग वैदिक सिस्टम के हिसाब से बाकी सारी चीजें ठीक है बट ये जो है ना कि सोल कोड में रीयूनियन हो जाती है ये मायावाद कॉन्सेप्ट है जिसमें वो पर्सनल फीचर को नहीं मानते भगवान के तो मतलब बट स्टिल ये तो कह ही सकते हैं कि वो काफी क्लोज है फ्रॉम द रियल फॉर टू द रियल अंडरस्टैंडिंग करेक्ट Yes. According to the Universal Jewish Encyclopedia, the Hasidic Jews hold similar beliefs. Okay. मतलब पुराने टाइम में और रिलीजन के भी जो लोग थे कवाला और ये सब वो लोग भी वैदिक सिस्टम को काफी क्लोजली एक्सेप्ट करते थे Okay, in the 13th century AD, the theologian Origen, one of the fathers of the early Christian church and its most accomplished biblical scholar, wrote, by some inclination toward evil, certain souls come into bodies, first of men, then through their association with the irrational passions. After the allotted span of human life, they are changed into beasts, from which they sink to the level of plants. From this condition, they rise again through the same stages and are restored to their heavenly place. ये मतलब अलग अलग थॉट बता रहे हैं ना तो क्रिश्चियन चर्च का भी कुछ ऐसा थॉट बताया है कि वन आफ्टर अनदर दूसरी बॉडी मिलती रहती है बट एक बात तो है कि जितना क्लियरली वैदिक टेक्स्ट में मिलेगा आपको बाकी और कहीं इतना क्लियर मिलता नहीं है लोग आते से रहते हैं Yes, Prabhuji, undoubtedly. Sure. There are many passages in the Bible itself indicating that Christ and his followers were aware of the principles of reincarnation. Once the disciples of Jesus asked him about the Old Testament prophecy that Elias would reappear on earth, in the Gospel of St. Matthew, we read, Jesus answered them, Elias shall truly first come and restore all things. But I say unto you that Elias is come already, and they knew him not. Then the disciple understood that he spake unto them of John and the John the Baptist. In other words, that Jesus declared that the John is a Baptist who was beheaded by Herod was a reincarnation of the prophet Elias in another instance. Jesus
Give me 1 second. In another sense, Jesus and his disciples came across a man blind from birth. The disciples asked Jesus, "Who did this sin? Who did sin, this man or his parents, that he was born blind?" Regardless who had sinned, Jesus replied, "Here was a chance to show a work of God." He then cured the man. Now, had the man been born blind for a sin of his own, it must have been a sin done before his birth, that is, in a previous life. And this was a suggestion that Jesus did not dispute. तो सही है ना. Yes, yes. मतलब जीसस ये नहीं, ये मतलब वो बोले कि उनके डिसाइपल पूछे कि इसने ऐसा क्या किया जो ब्लाइंड बन गया ये व्यक्ति. तो जीसस कहे कि जो भी था तो सही, बट लेट मी शो यू द वर्क ऑफ गॉड. ऐसा करके उन्होंने उसको ठीक कर दिया. और बाद में फिर किसी डिसाइपल ने बोला कि कुछ ना कुछ तो पुराना इसका सिन रहा ही होगा. तो बोल रहे हैं कि जीसस ने फिर उसे डिस्प्यूट नहीं किया कि नहीं ऐसी कोई बात नहीं. मतलब हमेशा एक्सप्लेन करते ही थे, तो इस केस में एक्सप्लेन नहीं किया, ठीक कर दिया कि लेट मी शो यू द वर्क ऑफ गॉड, बट डिस्प्यूट नहीं किया. ओके, द कुरान. ओके, आप पढ़ना है ना. ईशु प्रभु. The Quran says, "And you were dead, and he brought you back to life, and he shall cause you to die, and shall bring you back to life, and in the end shall gather you onto himself." Among the followers of Islam, the Sufis specifically believe that death is no loss, for the mortal souls continually passes through the different bodies. Jalaluddin Rumi, a famous Sufi poet, writes, "I died as a mineral and become a plant. I died as a plant and remained man. I died as an animal and I was man. Why should I fear when I less by dying? When I was less by dying." The timeless Vedic scriptures of India confirms that the souls, according to its identification with material nature, takes one of 84 lakhs form, and once embodied in a certain species of life, evolves automatically from lower to higher forms, ultimately attaining a human body. Right. Thus, all of the major Western religions, Judaism, Christianity, and Islam, have definite threads of reincarnation toward the fabric of their teachings, even though the official custodian of dogma ignores or denies them. Yes. I will drop Prabhuji. I have a meeting, Prabhuji. Haribo. Yeah. Very well. Thanks for joining, Prabhuji. Hare Krishna. Okay. Ashwin. अभी कंटिन्यू कर लेंगे हम लोग. क्या टाइम हो गया? 7:30 हो गया. 7:30. So I think we can continue from here tomorrow. Okay, Prabhuji. ठीक है, तो मेनली तो रिइंकार्नेशन का ही प्रभुपाद इसने मेनली बताया. डिफरेंट रिलीजन क्या बोलते हैं क्या नहीं. एक्चुअली हम लोग को थोड़ा सा ऐसा लग सकता है कि क्यों पढ़ रहे हैं दूसरे रिलीजन भी, वो थोड़ा जरूरी है, हम लोग को याद भी रखना चाहिए ताकि प्रीचिंग में काम आए फिर, है ना. कि देखो रिइंकार्नेशन अपना ही नहीं है, बाकी लोग भी इससे पहले बोलते आए हैं. बात अलग है कि अभी हम पढ़ रहे हैं थोड़ा उनका रिलीजन के हिसाब से, तो थोड़ा सा कंफ्यूजिंग लगता है क्योंकि इसमें क्लैरिटी नहीं है ना. जितना वैदिक टेक्स्ट में हमने पढ़ा है, बट प्रीचिंग पॉइंट ऑफ व्यू से है सत्य हुआ. Yes, Prabhuji. Yeah. Ishu Prabhu, you want to add something? ये मुझे स्टार्टिंग में एक पॉइंट अच्छा लगा था कि प्रभुपाद रीइंकार्नेशन समझाने से पहले आपको कॉन्शियसनेस समझा रहे थे कि वो समझना पहले बहुत जरूरी है कि आपकी चेतना ही आपको मतलब डिसाइड कराती है नेक्स्ट थिंग, एंड इट्स यूनिक टू ऑल. तो ये मायावाद भी खंडन कर रहे थे इससे प्रभुपाद, बता रहे थे कि ऐसा कुछ नहीं है कि हम एक में जाके मिलेंगे, और ऐसा मतलब जो कॉन्सेप्ट फैला रखा है कि एक ही से आ रहे हैं सारा, मतलब नो डाउट देयर इज अ सेम quantity or quality, same quality which the God had of the soul, but though it is unique to every person, that we do not feel the pain of the other person body. You have your own pains, your thinking, your willing, and your desires. So that concept itself clarifies that
that basic understanding itself clarify that Mayavad has a weak foundation. So I should not say it's totally in wrong, but yeah, somewhere it's weak and there's no actual concrete information and knowledge about it. Yeah. Yes, Prabhuji. Thank you, Prabhuji. तो इसमें ये भी क्वेश्चन आता है कि भाई मान लीजिए कॉन्शियसनेस है तो कैसे हम उसको काउंटर करेंगे, क्योंकि क्रिश्चियन ये कहते हैं कि thou shall not kill, तो ह्यूमन पे अप्लाई होता है क्योंकि उनके पास सोल है, और एनिमल्स या बाकी लिविंग एंटिटीज के पास सोल नहीं है तो उन्हें मार के खाया जा सकता है। तो मेरा क्वेश्चन है कि हाउ वुड यू प्रूव कि नहीं भाई ह्यूमन के अलावा भी बाकी जो एंटिटीज हैं उनके पास सोल है। ब्रो मैं ये पढ़ रहा था, एक बुक है, लॉयर है हमारे मतलब फील्ड में, तो इनका नाम है जे साई दीपक है इनका नाम, आपने शायद सुना हो या यस प्रभु सुना है। अच्छा सुना है आपने, अच्छा। तो उन्होंने एक किताब लिखी थी अभी, इंडिया दैट इज भारत। तो उस बुक में वो कॉन्सेप्ट समझा रहे थे वेस्टर्न मतलब अंग्रेजों का, कि जो इनकी जो आइडियोलॉजी रहती थी मतलब दूसरे कंट्रीज पे रूल करने की, तो वो कहाँ से डिराइव करते थे। तो वो अपना सोर्स लेके आते थे बाइबल के अंदर से, और जहाँ बाइबल में लिखा हुआ है कि जो व्हाइट पीपल दे ओनली हैड सोल, और जितने भी हैं रेस्ट अदर लिविंग एंटिटीज इन दिस एंटायर प्लैनेट, they are bound to be ruled by white peoples because they had only souls. So बहुत मिसकंसेप्शन था, मतलब जो सोर्स वो इतनी अथॉरिटी से एक दूसरे के ऊपर जमाते थे, अफ्रीकन को स्लेव बना देते थे, इंडियंस के ऊपर अत्याचार करते थे। There are lot many things कि they did not consider that these people having soul in their body, only the white people are having. So this is what giving them the authority to rule over them, and I feel very the sad dangerous that what kind of religion is how religion is teaching नहीं, बट people. क्वेश्चन ये है कि हाउ वुड यू डिफरेंशिएट, जैसे कि ये व्हाइट लोग आए और बोले कि हमारी सोल है आपकी नहीं है, तो वैसे ही क्रिश्चियनिटी में बोलते हैं कि ह्यूमन बीइंग्स की है एनिमल की नहीं है। तो मेरा क्वेश्चन है नहीं, कि क्रिश्चियनिटी की बोल रहा हूँ प्रभु, मैं बाइबल से तो बोल रहा हूँ, ये दे बिलीव कि एनिमल भी नहीं, ह्यूमंस भी, इनफैक्ट ओनली द व्हाइट पीपल्स आर हैविंग सोल्स। जो उनका स्लेव बनाने का बट हाउ वुड रीजन यू था प्रूव इज द क्वेश्चन, हाउ वुड यू काउंटर बाइबल से आर्गुमेंट। लेके ड्राइव लेके आते थे। हाउ वुड यू प्रूव, वो मैं यही बताना चाह रहा था कि दे हैड द यूनिकनेस, मतलब हर किसी के पास यूनिक विलिंग है, यूनिक पेन है। That itself proves that कि there is the existence of same thing which is in you, but we have a मतलब different conscious about the same thing। मतलब मेरे पेट में दर्द हो रहा है तो आपके पेट में दर्द नहीं हो रहा ना। That itself proves कि मैं भी जिंदा हूँ, आप भी जिंदा हूँ, but we have different content, मतलब जो bodily है, जो conscious है हमारी इसमें। तो एक ये पॉइंट आ जाता है इसमें। तो आई वाज वेरी शॉक्ड कि मैं पढ़ा, मैंने कहा ये बताओ किस आइडियोलॉजी से तो वॉर करने आते थे और लोगों के ऊपर ये लूटपाट मचाते थे, and the backing is coming from the Bible itself. So I was little shocked कि मतलब Old Testament की बता रहे थे, proofs बता रहे थे, उसके अंदर लिखे हुए थे, and really मतलब it shocked me, मतलब कैसे एक्सप्लॉइट करते हैं मतलब लोग रिलीजन के नाम पे दूसरे लोगों को, और अपने आप को खुद कितना चीट करते हैं लोग रिलीजन के नाम पे। उदित को आप भी ट्राई करना चाहिए। मान लीजिए कोई बोला जाए कि भाई टेबल के अंदर तो सोल है और बकरी के अंदर सोल नहीं है, तो जी मैं तो रिफ्यूट ही करूंगा इस कमेंट को। मतलब मैं तो कैसे करेंगे, मतलब अब मैं तो क्रिश्चियन हूँ जैसे, है ना, मैंने कह दिया कि आपका वैदिक टेक्स्ट गलत बोलता है, मेरे हिसाब से तो दोनों में सोल है, टेबल में भी है बकरी में भी है। या फिर एक क्रिश्चियन आ गया, वो कहने लगा कि सोल में भी नहीं, इधर भी नहीं है, इधर भी नहीं है, तो टेबल में भी नहीं है, बकरी में भी नहीं। तो आप उसको काउंटर आर्ग्यूमेंट कैसे करेंगे? तो जी पहले तो मैं ये समझना चाहूंगा कि वो सोल का मतलब मीनिंग क्या उन्हें पता क्या है। हो सकता है कि उनकी डेफिनेशन ही गलत पता हो। दूसरा क्या है कि हाँ, इसीलिए डेफिनेशन ही तो गलत बताया उसको, तभी तो वो मतलब उसे डेफिनेशन सही पता होती तो वो कह देता ना कि टेबल के अंदर सोल नहीं है। रीजन तो यही आप है। क्या डेफिनेशन देके उसे कन्विंस करेंगे, वो क्वेश्चन है। ओके प्रदीप, मतलब रीजन यही था, मतलब डेफिनेशन पता करने का पहले कि मैं उसी पे उसे काउंटर करूँ कि मतलब डेफिनेटली कि मतलब मेरे को तो कन्विक्शन है कि मतलब सोल तो कॉन्शियसनेस एक एनर्जी है अगर हम लोअर फॉर्म पे आए। ठीक है, अगर जैसे एक आदमी मरा हुआ रखा है और एक शेर मरा हुआ रखा है,
तो हम दोनों केस में नहीं बोलेंगे कि ये आदमी मर गया और ये शेर मर गया, बट दोनों का बॉडी वही है, तो कौन मर गया? तो वो उसमें से सोल, मतलब आदमी के अंदर से सोल निकल गया, तो फिर जानवर के अंदर से क्या निकला? व्हाट वाज दैट? तो मतलब वहां पे भी मतलब, और ऐसे मतलब अगर आप देखेंगे कि अनलेस अनटिल की हम रियलाइज कर सकते हैं कि ह्यूमंस रियलाइज कर सकते हैं बिकॉज ऑफ द फिफ्थ सेंस कि व्हाई वी बोर्न एज अ ह्यूमन एंड व्हाट इज द रीइंकार्नेशन, वी कैन स्टडी द वैदिक लिटरेचर। बट इसमें मतलब इसमें ना ऑब्वियसली ये भी एक अच्छा आर्गुमेंट है कि भाई जैसे आदमी मर गया और फिर वो एक जिंदा है, तो व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द टू? बट इसमें वो लोग बोलते हैं कि मशीन चल रही थी, ये ऑन ऑफ की तरह है, एक मशीन चल रही थी, एक रुक गई है, तो सोल नहीं है इसमें कुछ भी। बोले जीसस है, उन्होंने एक मशीन चालू कर दी थी तो वो काम कर रही थी, और अब जीसस ने मशीन बंद कर दी है, दैट्स ऑल। कहते सोल, बोले सोल नहीं है, जानवरों में नहीं होती वो सोल। ओके, तो फिर से फिर क्या बोले? व्हाट इज दिस, मतलब जैसे इंसान रिप्रोड्यूस कर रहा है बिकॉज ऑफ द सोल, जानवर भी रिप्रोड्यूस कर रहा है। हाँ, ये अच्छा पॉइंट है। तो फिर इसको हम कैसे कंपेयर करेंगे मशीन से? बोले मशीन में रिप्रोडक्शन नहीं है, मशीन, यस प्रभु, है ना? ये मशीन जो है एक मशीन से दूसरी नहीं बनाती है, तो दैट इज वन। सेकेंडली फिर सोल के डेफिनेशन में बता सकते हैं कि जब सोल बॉडी में एंटर करती है तो वो अपने साथ कॉन्शियसनेस लेके आती है। जैसे हीट जहाँ भी होगी अपने, फायर जहाँ भी होगी अपने साथ हीट लेके आएगी, है ना? यस प्रभु। तो हीट इज द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ फायर, सिमिलरली कॉन्शियसनेस इज द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ सोल। तो सोल आएगी, कॉन्शियसनेस आएगी, और कैसे पता कि कॉन्शियसनेस आ गई है? उसे सुई चुभाओगे तो दर्द होगा, जैसे ईश्वर प्रभु बता रहे थे। तो पेन, प्लेजर, ये सब कॉन्शियसनेस उससे पता चलता है कि कॉन्शियसनेस है। जैसे कैसे पता चलेगा कि हीट है? तो हाथ रखो तो गर्म लगेगा, है ना? तो वैसे ही अगर कॉन्शियसनेस आ जाती है जब बॉडी के अंदर, जैसे सोल एंटर करी बॉडी में, कॉन्शियसनेस आ गई, तो कैसे पता चलेगा कि जैसे बच्चा फिर रोने लगता है, चिल्लाने लगता है, परेशान करने लगता है, माँ के घर में लात वात मारने लगता है। इस तरह से हम कह सकते हैं कि इसलिए टेबल में और बकरी में जैसे हम बोल रहे हैं, तो टेबल में अगर आप सुई चुभाओगे तो ये चिल्ला नहीं रही, इसकी कॉन्शियसनेस नहीं है। पर बकरी को सुई चुभाओगे तो चिल्लाएगी, उसका कॉन्शियसनेस है। तो कॉन्शियसनेस है मतलब सोल। यस प्रभु। Is it convincing? You think it is convincing? Yes प्रभु, according to me it is. Okay, ठीक है। मेरा एक फ्रेंड है थॉमस साइरक, क्रिश्चियन है वो, उससे मेरा एक बार डिस्कशन हुआ था, तो फिर उसको ये बोला तो he was little convinced, I think so. वो भी हार्डकोर क्रिश्चियन है। Anyway, वो मैं एक लास्ट पॉइंट ऐड करना चाहूंगा। तो अपनी बुक में वो ये भी बताते हैं कि जो हम कहते हैं ना कि हमें खतरा असली इस्लाम से है, एंड दे मुस्लिम पीपल एंड ऑलवेज डिमीनिंग द, मतलब हमारे रिलीजन को डिमिनिश करना चाहते हैं एंड ऑल दैट ब्ला ब्ला। लेकिन वो अपने स्टैट्स बताते हैं इसके अंदर कि एक्चुअल हमें खतरा है तो क्रिश्चियनिटी से है, वेस्टर्न फिलोसफी से, वेस्टर्न एजुकेशन से है। तो उसमें वो स्टैट्स बताते हैं कि इतना इस्लाम में हमें डिस्ट्रॉय, इस्लाम है ना कि ऐसे मतलब हमें दिखता है इस्लाम के जो भी अटैक्स करते हैं, जैसे टेररिस्ट अटैक हो गए या विरोधाभास हो गया चीजों में, लोगों को लेके, सोसाइटी में आइडियोलॉजी को लेके, they always publicize all the things. But what Christianity is doing is they are slow poisoning by education, by influencing the Western ideology, ideas in it. और उसका प्रभाव ज्यादा है। वो बताते हैं कि स्टैट्स के हिसाब से कि असम, ये नॉर्थ ईस्ट के गांव और ऐसी पॉलिसीज फ्रेम करी थी अंग्रेजों ने 1950s के टाइम पे, जब कॉन्स्टिट्यूशन हमारा फ्रेम हो रहा था 1935 के टाइम पे, कि वो ये बोलते थे कि प्रोपोगेशन ऑफ ये जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन हमें देता है, राइट्स देता है प्रोपोगेशन के, तो बोल रहे थे कि इंडिया में किसी भी कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली में किसी को जरूरत ही नहीं थी हिंदू रिलीजन को प्रोपोगेट और प्रमोट करने की। वी डू नॉट हैव अ नीड, बट देयर आर 3 क्रिश्चियन इन द कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली जिन्होंने इस वर्ड को फोर्स किया कि प्रोपोगेशन वर्ड होना चाहिए कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर, एंड दे स्टॉप द इंडियंस टू गो इन द नॉर्थ ईस्ट और नॉर्थ आसाम की जगह प्रोपोगेशन करने के लिए, ओनली द क्रिश्चियंस वाज अलाउड। और आज वहां पर देखेंगे तो आप गांव के गांव पूरे के पूरे कैथोलिक हो गए, मतलब पूरे बैप्टाइज कर रखे हैं उन्होंने। नॉर्थ ईस्ट छोटे छोटे गांव, वहां के ट्रेडिशनल्स जो थे, ट्रेडिशन सब मिटा दिए अगर आज के स्टैट्स देखेंगे तो। एंड शॉकिंग तो ये है कि
1950s के टाइम पे 2-3% कुछ था क्रिश्चियन का रेशियो इंडिया के अंदर, और ऑन पेपर्स आज तकरीबन 12 से 13% है क्रिश्चियनिटी का रेशियो इंडिया के अंदर। एंड दैट इज वेरी मतलब वो बोलूंगा ना कि बहुत ही ज्यादा अमेज करने वाले फैक्ट्स हैं, जिसमें कि जो मुसलमान का है वो 7 to 8% है इंडियन पॉपुलेशन